GS3 एक स्कैटर्ड पेपर है, राइट? देयर आर 6 सब्जेक्ट्स, तो ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने हैं और बहुत सारी जगहों से पढ़ने हैं। इसके अलावा मुझे करंट अफेयर्स भी पढ़ना है बिकॉज इट इज अ स्लाइटली करंट अफेयर्स ओरिएंटेड पेपर। देन आई ऑल्सो नीड वैल्यू एडिशन, आई हैव टू कवर PYQs as well. I need to have small notes so that I can revise at the end also. I'll give you specific value addition pages that have quotes, keywords, data points, topic wise segregated, जिसमें से आप 2-3 चीजें याद करो और जाके आप मेंस में you will do well in GS3. The topper of GS3 last year, Pradeep Parmar ji, 109 marks in GS3, the highest in the country, has been a student of this course. GS3 was very good by Shivan sir. Hello and welcome to Clarity for UPSC. I am Dr. Shivan and this is the official launch of the GS3 mains module for mains 2026. मैं mains 2027 के लिए भी एक मॉड्यूल करूंगा but that will be in August. Now, what are we trying to do here? GS3 एक scattered paper है, right? There are 6 subjects: economy, environment, disaster management, security, agriculture, science and tech. And all of these subjects are not really related to each other. और सबकी approximately equal weightage है, about 50 marks, right? तो ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने हैं और बहुत सारी जगहों से पढ़ने हैं। इसके अलावा मुझे करंट अफेयर्स भी पढ़ना है बिकॉज इट इज अ स्लाइटली करंट अफेयर्स ओरिएंटेड पेपर। देन आई ऑल्सो नीड वैल्यू एडिशन, आई हैव टू कवर PYQs as well. I need to have small notes so that I can revise at the end also. And all of this in a one-stop solution I am going to offer you here. So the idea is simple. पूरा GS3 का syllabus with high quality content covered in a PYQ oriented coverage. सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट थीम्स हम कवर करेंगे। रिविजन के लिए वील हैव क्रिस्प हैंड रिटन नोट्स। और जो वैल्यू एडिशन का चैलेंज है, फॉर ईच सब्जेक्ट आई विल गिव यू स्पेसिफिक वैल्यू एडिशन पेजेस दैट हैव कोट्स, कीवर्ड्स, डेटा पॉइंट्स, टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड, जिसमें से आप 2-3 चीजें याद करो और जाके आप मीन्स में यू विल डू वेल इन GS3। नाउ GS3 में एक और चैलेंज रहता है और वो चैलेंज है करंट अफेयर्स का, कि यार हम करंट अफेयर्स कैसे इनकॉर्पोरेट करें? क्या हमें करंट अफेयर्स के लिए कोई और चीज पढ़नी पड़ेगी, कोई बड़ा डॉक्यूमेंट पढ़ना पड़ेगा? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो, बिकॉज करंट अफेयर्स के लिए आई हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर द पास्ट 2 years and classifying every article that has appeared that is relevant to GS3 and I added to the notes, right? So you can absolutely skip the hassle of reading newspaper, MEAS 365, some other document. You can just read this material and GS3 will be sorted. Now, रिविजन इज अ मेजर चैलेंज। रिविजन में क्या चैलेंज आता है कि मेन से पहले बहुत सारे टॉपिक्स हैं। GS3 का पेपर एनीवे संडे सुबह होता है, सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गिव GS1 एंड GS2 एंड देन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम यू हैव टू रिवाइज GS3 एंड गिव द GS3 पेपर, और उसके बाद आपका एथिक्स का पेपर है। तो उसको सॉल्व करने के लिए क्रिस्प हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं और टॉपिक वाइज लेक्चर्स बनाए हैं, ताकि फॉर एवरी टॉपिक यू कैन क्रिएट मे बी अ 1-pager विद योरसेल्फ एंड इजीली टेक इट टू द मेंस। Now, why am I able to make all these tall claims? I'm able to make all these tall claims because of my track record. The topper of GS3 last year, Pradeep Parmar ji, 109 marks in GS3, the highest in the country, has been a student of this course. And I want you to take a look at what the other students of this course are saying from the past few years. GS3 के लिए तो और कहीं जाना नहीं, 24 में और 25 में आप ही से किया है सर। कहीं भी मेरे को लिख के देने में भी दिक्कत नहीं है, मतलब वन सोर्स फैसिलिटी है सर। My association with Sarthi IAS has mostly been for the mains part. I did GS3 with Shivan sir and it was pretty helpful for me. Especially GS3, I would suggest, I have suggested many of my peers as well to get enrolled in that. I was associated with Sarthi IAS during my mains preparation in my GS3 module. And further, the GS3 module, especially given that GS3 was very lengthy and lot of topics, Shivan sir's module was very helpful. It was more very meticulously planned and that helped me a lot. GS3 में तो सर बहुत बचा लिया, मतलब this was my second mains. First one was when you qualified in 2022, so that time I missed the final cutoff by 13 marks. So that time GS3 में काफी कम marks, 83 I guess. So this time, that time GS3 was a struggle. I mean, it was so vast कि क्या cover करोगे और क्या छोड़ोगे, but this time focused approach की तो बहुत अच्छा था। So I did GS3 completely from Sarthi IAS. GS3 was absolutely amazing. I mean, there were
like direct things in the mains examination from GS3? I was part of GS3 module. I've been taking Sarthi courses for 2 consecutive years. So the quality of content, also the nature of delivery, and in the end, just the personalized nature of feedback. So I think that goes a long way in a preparation where everyone is studying from the same resources. I've taken Shivan sir's GS3 module for mains. He provided many insightful suggestions and he gave me many strategies to bring coherence and confidence in my answers. GS3 module by Dr. Shivan. I referred to it this year also. Overall experience was cordial here. GS3 का सर ये मेरा 5th अटेम्प्ट था सर तो प्रॉबेबली सर आपके ही सर गाइडेंस के थ्रू अब पहली बार मेंस मेरा क्लियर हुआ है सर. I enrolled myself for the GS3. GS3 was very good by Shivan sir. It was very important because economics, agriculture, internal security, disaster management is for these things I have completely relied on Shivan sir's notes. GS3 का जो मेरा कंटेंट है बियॉन्ड इकोनॉमी इट्स ऑल सारथी IAS का कंटेंट ओनली बिकॉज आई वाज लैकिंग देयर. I was also the part of the GS3 program. That gave me a perspective of how to proceed for the mains. I had joined in fact GS3 का program भी था. It was very helpful. I think मेरा जो भी improvement होगा, I think that it will play a very important role because it really helped me analyze my answers and make improvements, small improvements की एक conclusion can be, it can have some SDG or something, but it might not be as forward looking as some other conclusion. In my journey of UPSC preparation, I have been associated with Shivan sir and Sarthi IAS, and then I have got an understanding about how to write mains answers, how to have templates for different set of questions, and Shivan sir's teaching was absolutely flawless. Now, you might have seen the toppers feedback, but I also want to show you one more thing. In mains 2025, 19 out of 20 questions I was able to hit directly, and that is not like it's an achievement या मैंने कुछ predict कर लिया था. The fact is that the coverage is so comprehensive कि इसके बाहर question आना GS3 में काफ़ी unlikely है. Let me show you a couple of things. Firstly, these are the handwritten notes that I give you. तो इसमें आप देखोगे there are diagrams that you can take directly to the paper, right? They are well organized and they are written in a framework manner. तो फ्रेमवर्क मैनर में जब होता है तो हमारे लिए याद करना भी इजी होता है, राइट? नाउ लेट मी शो यू सम क्वेश्चंस फ्रॉम मेंस 2025. जैसे ये क्वेश्चन आया था ऑन स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, एंड एज यू कैन सी इट वाज कवर्ड डायरेक्टली इन द नोट्स. This question on Indian economy moving away from free trade and multilateralism to protectionism and bilateralism, directly it was covered in the notes from the economic survey. This question, as you can see, on northeastern states and the peace agreements that had happened. तो peace agreements भी यहाँ पर डिटेल में covered थे और पूरी northeast insurgency यहाँ पर covered थी, right? This question on India's climate commitments and INDCs was directly covered here. And further, I'll put a link of the video in description. You can watch that video of GS3 mains analysis from 2025, and I hit 19 out of 20 questions directly from my notes because the coverage is so comprehensive कि किसी भी साल पेपर आएगा, we'll have at least 10-15 good points to write in every question that they ask us. Now, what is the class methodology here? See, the idea is simple. किसी भी GS3 के टॉपिक को, मान लीजिए हम एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, हम पहले PYQs को एनालाइज करते हैं और इंपॉर्टेंट थीम्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं. Then we go for a conceptual explanation. See, it's very easy to give you notes कि यार ये टॉपिक है, let's say supply chain management ही है, इसमें ये challenges हैं, ये इसमें way forward है, but that rigid content doesn't really help us. मुझे दिमाग में एक टॉपिक सुनते ही कुछ कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कुछ 5-6 कीवर्ड्स आने चाहिए, then I can frame my answer based on what they have asked. So we go for a conceptual explanation and we have handwritten notes so that you can revise whatever is asked easily. Then cross subject linkages are important. So for example, when I teach you economy here, I will also teach you poverty, which gets asked in GS1 and GS2. I'll also teach you skill development that gets asked in GS2 and its linkage with employment. So a lot of questions even from GS1 and GS2 get covered here. Then content is not enough. We also have to understand how answers are to be written. So for every topic, we go for मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस कि यार ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो इस साल आ सकते हैं और उनको अप्रोच कैसे करना है. एंड अल्टीमेटली वी हैव वैल्यू एडिशन फॉर एवरी टॉपिक. जैसे आप नक्सलिज्म पढ़ोगे तो उसके बाद एक वैल्यू एडिशन का पेज है, आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट पढ़ोगे उसके बाद एक वैल्यू एडिशन का पेज है जहां पर कोट्स,
कीवर्ड्स और डेटा पॉइंट्स हैं, कुछ रीसेंट कॉन्टेक्स्ट का करंट अफेयर्स है, जिससे हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं, एक एक पॉइंट जो हमें एक एक मार्क एक्स्ट्रा देगा हमारे GS3 के पेपर में. Now, what is the schedule for this program? We have a live orientation session on 22nd June. And after this is the schedule that we follow. आप देखोगे कि 2 weeks मैंने रखे हैं from 22nd June to 5th July. And I just want you to give me the first half of your day. Right? So आप मुझे इन 2 weeks में रोज बस 4 से 5 घंटे दे दो एंड आपका पूरा GS3 फ्रॉम स्क्रैच इज कवर्ड एंड यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स. ना कोई करंट अफेयर्स की टेंशन, ना कोई वैल्यू एडिशन की टेंशन. This is a complete one-stop solution. From 22nd June to 5th June, you'll easily be able to manage GS3 as a whole paper. Now, this course will be valid till mains 2026 and this is a recorded course. See, recording करने के यहाँ पर 2 reasons हैं. Firstly, it would be difficult for you to spend live time with me in this time जब आपका mains है. इस टाइम पे आपको बहुत चीज़ें रिवाइज करनी होती हैं, so it would be better to have things recorded. Secondly, the recorded course is such that it is arranged topic wise. इसमें ऐसा नहीं है lecture 1, lecture 2, lecture 3, lecture 4. इसमें topic wise videos हैं. So those topic wise videos, you can select the things that you want to read, right? And you can watch the recordings any number of times. One more thing I'd like to tell you that all of these recordings I have done in the past 1 to 2 months. तो ये इसी साल की updated current affairs के साथ recordings हैं. Now what about the current affairs that are happening now? जून एंड जुलाई में भी तो कुछ करंट अफेयर्स होंगे, उसके लिए भी आई विल टेक एन अपडेटेड लेक्चर विद यू कि जो 2 महीने के करंट अफेयर्स हैं कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछ लेता है यूपीएससी. सो इवन दैट इज समथिंग वी कवर हियर. Now, as you know, this GS3 mains module is a part of MMP Plus and you can choose what is right for you. The GS3 mains module is for somebody जिसको सिर्फ GS3 पढ़ना है, and if you want a comprehensive mains preparation system, that is in MMP Plus. The link of the course is available for both MMP Plus and GS3 mains module in the description. And as we always have, we have kept up at Sarthi IAS our mission of affordability. So thank you for watching. I'll see you on 22nd June for the orientation lecture and let's get GS3 right.